अगर मैं दाल को अपर मोलर को हम लिंगुअली देखते हैं तो आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ व्हाट वी सी। ये कस्प है, ये डिस्टल कस्प है और ये गम लाइन बन रही है, ये उसकी प्रॉक्सिमल वॉल बन रही है। सही। जिस तरह हमने बक्कल जो उसको अगर हम बक्कल भी देखते हैं, अपर मोलर का जो बनती है शेप वो ये बनती है। और उसी को हमने 1.5 रिड्यूस करना है। बेसिकली वही ओरिजिनल शेप हमने उसकी मेंटेन करनी है। उसी तरह जो लोअर है जो बी प्लेन है, बी प्लेन इज लाइक ये आपका है, ये ए प्लेन है, ये बी प्लेन है और ये सी प्लेन है। ठीक। अब हम इस वक्त बात कर रहे हैं बी प्लेन की। इस बी प्लेन में तो इसको क्लोजर लेके आओ, जूम का। बी प्लेन की जो ये शेप है ना, इसी शेप को हमने 2 मिलीमीटर नीचे ड्रॉप करना है। So when we are done with the lingual prep, this is how it's supposed to look like. ठीक। जो सबसे most common area of under prep is always the groove area. वो occlusally and lingually both. So हमें जो टेक्निक हम लर्न कर रहे हैं उसमें ये कि we cannot go wrong. We just have to follow original shape, उसको हमें 2 मिलीमीटर इसमें ड्रॉप करना है। अब इसको अगर मैं क्लोजली देखूं, ये ए प्लेन है, इसमें 2 कस्प है और ये एरिया इस तरह बन रहा है। ठीक। और ये इस तरह डिस्टल कस्प आ रहा है, डिस्टोपैलेटल कस्प। हमने इसकी जो रिडक्शन करनी है उसमें किस तरह करना है, हमने इसमें भी डब कट्स लगाने हैं। हमने डब कट सीधा नहीं लगाना, हमने डब कट उसके लॉन्ग एक्सेस, इस एरिया के लॉन्ग एक्सेस पे एक 2 मिलीमीटर डीप डब कट लगा दिया। जब हम डब कट लगाए उसके बाद एक और डब कट उसके पैरेलल लगा दिया। ये जो ग्रूव है कुछ इस तरह आ रहा है। सो इसके पैरेलल हमने ये 2 डब कट लगा दिए। तो डब कट लगते हैं तो उनको आपस में आपने ज्वाइन कर देना है, यू कम ऑल द वे टिल हियर। देन द नेक्स्ट थिंग, सो बेसिकली इतना एरिया हमारा रिड्यूस हो गया। ठीक। देन व्हाट वी डू इज वी प्लेस डब कट राइट, एंड ये अगर ग्रूव की लाइन आ रही है तो जो डब कट होगा वो उसके जो बैक है उसके बिल्कुल सेंटर में हमने रखना है कि उसका मीजल और डिस्टल उसके बिल्कुल सेंटर में आपने बर्थ प्लेस करना है, दोनों साइड से इक्वली रिड्यूस करना है आपने। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज, अगर ये ग्रूव है तो मैंने उसको इतना एरिया मैंने उसको इसका सेंटर में प्लेस करके उसको रिड्यूस कर दिया। ठीक। देन द नेक्स्ट थिंग इज ये स्लोप। सो दिस स्मॉल कस्ट हैज 2 स्लोप्स अगेन। हमें इसको फ्लैट नहीं कर देना, हमें इसको भी ये क्रिएट करना है। सो बेसिकली ये जो पैलेटल है वो है इस तरह है, उसको हमने यूं नीचे लेके आना है, इस तरह है उसको यूं नीचे लेके आना है। सो दैट इज हाउ वी विल मेंटेन द ओरिजिनल शेप ऑफ बी प्लेन। कोई क्वेश्चन इसमें? I would also want to go over a few things के हम focus कर रहे हैं। I can see कि there is an effort and there is practice being done, और A plane is actually not that simple. Occlusal prep is not that simple. I mean, if you want to do it right, अगर आपने बिल्कुल flat करना है तो you can just take the bar, but under prep areas and over prep areas, weaken the third, आपका एंडो इश्यूज, वो सारी चीज़ें ओरिजिनल एनाटॉमी को अगर हम फॉलो करते हैं, वी डोंट हैव टू डू एंडो, विल हैव इनफ क्लियरेंस। उसमें कोई ये नहीं है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कभी है या नहीं है। इट्स नॉट वेरी इजी टू चेक क्लूजन व्हेन यू हैव द पेशेंट बाइट। सो द मोर प्रेडिक्टेबल वे इज कि अगर आप बर्थ और उसकी एंगल और जो डायरेक्शन है उसकी ओरिजिनल एनाटॉमी, ये 4 चीज़ों को कंबाइन कर लेते हो, आपको ये कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। दैट्स वन थिंग। सो डेंटिस्ट्री में लेट्स जस्ट फोकस ऑन क्राउन। आपने क्राउन करना है, आपने
You want to be a good dentist, so somebody who is able to do good crown bridge work. तो उसमें सबसे तो most important factor is the prep itself, according to what we are taught, not what we just feel like doing. आपका स्किल लेवल क्या है? स्किल लेवल ये नहीं कि वो मेरा बेस्ट है या आपका बेस्ट है या किसी और का बेस्ट है. स्किल लेवल जज होता है स्टैंडर्ड ऑफ केयर से. स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ केयर हमें बढ़ा दिया गया हुआ है. अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो देन वी आर डूइंग इट अकॉर्डिंग टू जो आपके एथिक्स हैं, व्हाटएवर. स्किल रिपीटेबल भी होता है. ये नहीं है कभी हमारा सही हो गया कभी नहीं हो गया. सो अगर आपकी प्रॉपर टेक्निक है ना, डजंट मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इज, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट रॉन्ग. आई थिंक दैट्स वेयर यू अचीव दैट लेवल कि जहाँ आप स्टैंडर्ड ऑफ केयर पे काम कर रहे हैं. स्टैंडर्ड ऑफ केयर में क्राउन ब्रिज में कि आपकी मार्जिनल इंटेग्रिटी होनी चाहिए, आपकी इनफ रिडक्शन होनी चाहिए, आपकी ओवर प्रेप नहीं होनी चाहिए, आपका दांत एंडो की मतलब कंप्रोमाइज उसकी तरफ नहीं होना चाहिए. उसके बाद आपको अमेरिका में या इवन यूरोपियन, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, व्हेनेवर यू डू क्राउन और ब्रिज यू हैव टू गिव 5 year वारंटी. और वो देयर इज ओनली 5% एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ फेलियर. फेलियर कैन बी देयर, वो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस. लेकिन है कि आपका 5% तक तो ठीक है, आपने 100 क्राउन किए उसमें से 5 को आपको प्रॉब्लम हुआ है. लेकिन जब प्रॉब्लम होता है तो वी आर सपोज टू टेक केयर ऑफ इट, ओन इट. इट्स नॉट कि एक दफ़ा मैंने चार्ज कर दिया और उसको प्रॉब्लम हुआ है. पेशेंट, आई मीन लिटरली वी हैड पेशेंट जिसके फुल आर्च उन्होंने एक ही सिंगल पीस ब्रिज लगा दिया, ओवर कंट्यूड, शी कुडंट च्यू, शी कुड नॉट ईट, और वो 10 months बैक हुआ है. 2-3 महीने वो जाती रही है विद ऑल द कंप्लेंट्स इन TMD एंड ऑल दैट, एंड द पेशेंट वाज जस्ट टर्न्ड अवे. आई मीन एक दफ़ा उन्होंने पॉकेट में. सो दैट इज नॉट स्टैंडर्ड ऑफ केयर, दैट इज नॉट प्रोफेशन. आपको अगर कोई चीज़, आई मीन थिंग्स हैपन, आई कैन मेक अ मिस्टेक. How you deal with that mistake defines you, not like you making a mistake. Obviously, every other case, every third case अगर mistake हो रही है. अच्छा, इसमें जो सक्सेसफुल रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री है वो ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा कान को बस मुंह में किसी तरह फोर्सली, आई मीन फोर्सली है ना कि अगर आपकी एनाटमी आप सही तरह फॉलो नहीं कर रहे हो. एक दांत है, ये अगर इसकी शेप है तो वो ऊपर वाले दांत से इस तरह आके उसके अंदर वो बैठ रहा है. दैट इज बीइंग कंसिडरेट ऑफ द स्पेस इन द माउथ. लेकिन अगर इसी जगह को मैं ये जो दांत है इस तरह, और मैं इस तरह इसको बना दूँ, आप उस स्पेस को वायलेट कर रहे हैं. वो बैठ तो जाएगा बट ट्री म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स होंगे, प्रॉपर क्लियर नहीं होगी, च्यूइंग नहीं होगी. दैट इज नॉट अ क्राउन, दैट्स अ बॉक्स. I mean, being a dentist, we're supposed to give them crown. Crown needs to look like how it was originally created by Allah. Because that's how it's supposed to be shaped. That's how it will fit into that space. अगर हम वो deliver नहीं करें तो obviously we're not. So success is not determined कि you just place something in the mouth and that's it. Success is determined when it comes to restorative work. It's long-term prognosis. आज से 5 साल के बाद where things stand. उसमें आपके मार्जिनल इंटेग्रिटी है, उसमें आपकी प्रॉपर उसकी एनाटमी है, वो प्रॉपर स्पेस के अंदर वो आके फिट हो रहा है, जिसकी वजह से TMD एक दांत, एक हाई कॉन्टैक्ट कैन लीड टू लाइक premature contacts and TMD and whatnot. So it shifts everything. So just dentistry is not just day off, it's follow-ups. Follow-up में आपके gingival health है या नहीं, अगर नहीं है that means something is not right. आप प्रोब मिस्टेक हो रही है. खाना एक पिक्चर देखते हो जिसमें आपके सारे दांत है, एक क्राउन के अराउंड ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है. ये नहीं होता कि पेशेंट ने बाकी दांतों को साफ किया और उसको उसने नहीं साफ किया होगा. सो ऑल दोज फैक्टर्स कम इन. इसमें सो स्किल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड स्किल इज नॉट जस्ट experience. Skill is experience and following the basic principles of standard of care.
एक completely हो गया. And then like when there is a problem, how do you deal with it? How do you own that? We are responsible for well-being of patient, overall well-being of patient. We have talked about oral systemic connection. There was this 38 years old lady who had 2 heart attacks at age of 38, and they linked that to abscess in one tooth. Abscess in one tooth, which got better after the endo. I mean that's serious. Now, एक बंदा है, patient है, वो उसने treatment नहीं कराई. I mean, they are responsible. हमारी भी responsibility बनती है कि we need to create that awareness. We need to believe in it. We need to educate masses and public and our patients at least. And that's okay. But what about एक crown हम लगा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा overhangs and open margins, and it leads to endo. It leads to gingival inflammation, which can contribute to oral systemic connection. So literally, this is serious. I mean, there was a 10 years old kid died in Washington DC around 17, 18 years back, and that's where this movement of oral systemic connection started, just because of abscess in one tooth. So people can die from abscess and infection in mouth. That could be because of their negligence. It could be because he created some situation in the mouth which led to it. Now, I mean, giving somebody a heart attack or leading to, because somebody has I mean, we just did a case a couple of days back. It is the second case. Last January I started a case. It took 7 to 8 months to really get the recovery. I'm still not very pleased with the gingival health and periapical healing. It's just, and she's 25 years old, 23 years old. Yesterday we did a case for 25 years old, 3 unit coverage, and it's not getting any better. It's just because it's been so messed up. So we have that thing where there is I mean, it's on our conscious. कि अगर हम contribute करते हैं to serious health issues because of whatever we do. Another component to being a successful restorative dentist or a dentist or any professional is me as a person. So it's not about dentistry only. I mean, they can be really talented, very trained dentists, but not able to run a practice. It comes down to personalities. It comes down to priorities. Like, I mean, if I'm going to use cheap supplies, I'm going to get cheap results. I'm going to attract cheap patients. It depends on, like, I mean, if I make promises and break them, and I never really keep my promises. I tell the patient to come at 7 and I'm not able to see them at 7. So there are small things which add up. A patient, let's just suppose, I mean, one of you goes to a dentist और उन्होंने crown करके दिया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हो गया तो problem नहीं होगा, and 2 years later you have problems with it. And you go to another dentist and they tell you कि यहाँ open margin है, यहाँ overhang है, shape proper नहीं है. Would you ever go back to that same dentist again? So, I mean, ये integrity की बात है ना. So, skill is one thing. Then communication skills. Are you able to convey what you can do? I mean, that a lot of people lack in that. And I mean, you can be the best trained dentist in town, but not able to convince patients to do the treatment. So, एक product है, वो बहुत अच्छी product होनी चाहिए, और उसकी जो delivery है, that matters here. How do you handle things? Practice management. That's a huge chapter. So everything combined, but it all starts with me as a person. If I'm willing to do the right things or not under all circumstances. That is what integrity is. Again, under stress, under difficult situations, when I'm rushed, I mean, it's okay. We don't really need to take X-ray to make sure there is a marginal integrity. We can deal with it later. So the thing with integrity is it's either there or it's not. It's absolute
unwillingness to make compromises, period. And if you come in that space, you know nothing will go wrong. It can still go wrong, but it will be not an intentional thing. Not intention ये नहीं, कोई नियत से नहीं कुछ करता, कोई नियत से फिर किसी को shoot भी नहीं कर देता. But it doesn't justify it still. So I think it's important to skill definitely starts. वो मैं strong headed हूँ, मैं समझता हूँ कि what is if I know what is right and what is not, then I will strive towards achieving that skill level. Unfortunately, that is something which should have been. I mean, we shouldn't be standing here and discussing a Cambridge period. Simple. It should have been taught. It just should have been taught. Because that's just the way it is. Imagine कि I need an orthopedic surgery and वो बंदे को proper training ही नहीं है. I mean proper training अभी done. We've been doing this for a couple of months now. You have spent a lot of time. Have you guys gone through clarity and training like? So I mean standard तो यही है ना कि I want whatever is available in USA when it comes to heart care. Why not give the same level of care? Because that's what standard of care is. So focus on that. Focus on your skills. Focus on your confidence, communication. We need to be mentally strong because it comes down to really challenging situations. It's a small thing. If I am able to make the right decisions or not at that split moment, it just takes 1 second to really. I mean, somebody made value. I mean, it didn't take hours to create that value. It just, and it's something you never can go back to. Quick question. How has it been so far? Fantastic. What is different? What is new? I was not very sure about the sequel and how to create it. Is there any change in contacts in dentistry in the last few weeks, months? Yeah. Any change in contacts, how you look at dentistry? Yeah, definitely. How? It's like what the Allah has given, you need to replicate the same thing. You can't, but at least you should put an effort to get closer to that thing. देखिए हम रेप्लिकेट जो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया वो नहीं कर सकते but बिल्कुल, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने गाइडलाइन दी हुई, हमें उसको फॉलो करना है. और अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, लाइक आई सेड, अगर मैं ये चीज है और इसको डुप्लीकेट नहीं कर रहा, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है मिसिंग इट आउट. एक आप कह लो जो प्रीमेच्योर कॉन्टैक्ट है, एक दान हाइपरक्लियन में है. Do you think it's just going to stay there? It's not going to do anything? It creates drifting and shifting and whatnot, TMD. It just messes up everything. So when we violate that space, we're changing whatever Allah has. And the beauty of that creation is that everything is in harmony. The muscles, the bone structure, the tooth, the shape, the space, everything is synchronized. And if we end up changing it, it just messes up everything. Jiva. How you look at things and how you want to be able to practice with reality or whatever. How do you feel? I mean, you told me that you haven't really done any restorative work. And no crown bridge work. Do you think you can do it now? There is a couple of So I think that's it. Let's work on B and C playing together. मुझे पहले आपने जो उसका नीजल हाफ है वो करके दिखाना है, फिर हम डिसल करेंगे एंड एट द एंड वी विल डू सी. बिल्कुल उसी तरह ओरिजिनल शेप की तरह ये चीज़ बनी है, उसकी शेप बन रही है. ये डिस्टल है, यहाँ थोड़ी से एक्स्ट्रा इस जगह पे ये जो डिस्टल स्लोप ऑफ द मीजल कस्प है वो थोड़ा सा ओवरक्रप्ट है, बाकी लुक्स फाइन.
ये चीज़ सही हो गई, ये स्लोप आ रहा है। अच्छा, इनकी वही डायरेक्शन है जो हमने लेके चले हैं, जहाँ से शुरू किया उसी डायरेक्शन को, उसी शेप को हमने मेंटेन किया फॉर द मोस्ट पार्ट। थोड़ा सा ओवर पर्पस जगह पे हुआ है। नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी विल वर्क ऑन द बी प्लेन। बी प्लेन को अगेन हमने ओरिजिनल एनाटमी को फॉलो करना है। बी प्लेन का जो इजी है थोड़ा ये वाला हाफ, वो ये है कि आपने जो सेंट्रल ग्रूव है वहाँ तक इसको बर को प्लेस करना है। ये डायरेक्शन नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन ये जो ये एरिया बना हुआ है ना, इसी की लॉन्ग एक्सिस में हमने इस चीज़ को यूँ एक डप कर लगा देना है। ठीक है, ये डप का 2 मिलीमीटर होगा। 2 मिलीमीटर मीन्स अगर ये 2 मिलीमीटर बाहर है तो इट मीन्स टू बी फ्लश। जब हम डेप्थ कट लगाते हैं और दोनों एंड पे ड्रॉप नीचे इक्वल करते हैं तो उसमें इस एंड पे भी और इस एंड पे भी जो ये वॉल हाइट बनेगी वो इक्वल बनेगी, और ये जो दोनों एंड पे मर्ज होगा। एक साइड पे ज़्यादा मर्ज नहीं हो रहा, दूसरी साइड से बाहर प्रोट्रूडेड नहीं है। दिस इज़ व्हाट वी सपोज टू बी डूइंग। एंड देन एक और डेप्थ कट अगर हम इसी के बिल्कुल पैरेलल, नॉट टचिंग द वो जो ए प्लेन, तो ग्रूव एरिया तक अगर हम कर देते हैं सेम दैट, so then all we have to do is we connect this together and we extend. So the important thing is कि हम उसकी ये जो एंगुलेशन है वो नहीं चेंज कर रहे, और इसकी ये जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। हम बर को इस तरह नहीं रख रहे हैं, मतलब ये जो एरिया है ना ये इस तरह शेप्स अप लाइक दिस, सो आई एम कीपिंग द बर इन दैट सेम डायरेक्शन। तो अभी मैंने इसको स्मूथ करना है जहाँ ये ज़्यादा, दैट मीन्स के ये डेप्थ कट्स के अराउंड जो एरिया अभी पूरा क्रप नहीं हुआ, इट शुड बी अ फ्लैट प्लेन। ठीक, जब ये हो गया अब हम आ गए ग्रूव जो है, वो ये जो ग्रूव है ना इट्स मोस्ट कॉमनली अंडर प्रप एरिया। तो इसको सेंटर में, इस ग्रूव के सेंटर में, मतलब आधा इधर से कटेगा आधा इधर से कटेगा, इसके सेंटर में उस ग्रूव की डायरेक्शन को फॉलो करके मैंने एक और डेप्थ कट दे दिया। बेसिकली ये रिजेक्शन हो रही है, ये डेप्थ कट नहीं हो रहा विद सच ए स्मॉल एरिया। इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर रहा हूँ, ये हमारा ये हो गया। अब ये रह गया कि हमारा ये जो डिस्टल कस्प है ना वो रह गया। इसको हमने क्या करना है कि ये बर्ड को इस डायरेक्शन में ला के एक हमने स्लांटेड सरफेस क्रिएट करनी है। कस्प जो होता है वो यूं है, उसी तरह हमने उसको क्रिएट करना है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज ये एक वेज बनेगा, यूं कप बनेगा। अच्छा, इसका एक पार्ट हमने कर लिया। अब ये जो एरिया है ना सीधा ड्रॉप हुआ हुआ है, इसको भी हमने करना है। ये जो डिस्टल स्लोप है बक्कल का, इसी के एंगल पे इसी की एक्सटेंशन को हम लेके चलेंगे यहाँ। सो ये आपका एक वी टाइप यहाँ वेज बनेगा। दैट्स हाउ यू मेक श्योर कि आपको इधर इधर और बेस पे, और ये ए की इसी डायरेक्शन को वो फॉलो करता है। अब ये हम जा रहे हैं उसी एंगल को लेके सी प्लेन बना रहे हैं। सो दिस एक्चुअली ये सारी की सारी एक कंटिन्यूएशन होती है। ये यूं आपको इसमें कोई स्टेप नहीं आएगा। दिस इज हाउ यू, अगर ये आपका स्लोप सही डायरेक्शन में और उसकी एंगुलेशन सही है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल सही है, तो यू जस्ट बेसिकली गोइंग लाइक दैट। ये चीज ठीक है। अब यहां से ये एंगल लेना है और उसी तरह इस साइड पे भी हमने, so this goes this way and this comes this way. बात समझ आई? So I can do this again. इसको बंद करो दोबारा।